So today we are going to discuss about a play, The Glass Menagerie, by a famous American dramatist, novelist, short story writer, poet, and scriptwriter Tennessee Williams. Was born as Thomas Lanier Williams on March 26, 1911 at Columbus. So this play is a memory play. अब memory play का मतलब क्या होता है? Memory play is a play in which a lead character narrates the events of the play which are drawn from character's memory. So memory play is probably a play in which a lead character, the protagonist, narrates everything that he has faced in his life. And this play was premiered on 1944. So without further delay, let's get into the play. The Glass Menagerie, an introduction. Plot summary. The play opens in the Wingfield apartment in St. Louis, where Amanda Wingfield lives with her crippled daughter Laura and her son Tom. At dinner, Amanda tells Laura to stay nice and pretty for her gentlemen callers, even though Laura has never had any callers and expects none. Amanda remembers the time she had 17 gentlemen callers all on one Sunday afternoon. Amanda then asks Laura to practice her shorthand and typing. और ये प्ले शुरू होती है विंगफील्ड अपार्टमेंट में, जहां अमेंडा विंगफील्ड अपने क्रिपल्ड डॉटर लॉरा और अपने बेटे टॉम के साथ रहती थी. डिनर करते हुए अमेंडा लॉरा से अच्छे और खूबसूरत रहने को कहती थी फॉर जेंटलमैन कॉलर्स. ये जेंटलमैन कॉलर्स का मतलब लड़के जो लड़कियों के लिए हाथ मांगने आते हैं, वो करने आते हैं. जबकि लॉरा को कभी कोई जेंटलमैन कॉलर्स नहीं आए थे और उसको ये भरोसा था कि कभी कोई भी नहीं आएगा. एंड अमेंडा सोचती है अपने टाइम को जब उसे 17 लड़के आए थे देखने के लिए ऑल ऑन वन संडे आफ्टरनून. वो ये इंसिडेंट को बहुत प्राइड के साथ कहती थी ऑलमोस्ट every time in the play. A few days later, Amanda comes home from Laura's school after finding out that Laura had dropped out several months earlier. Amanda is shocked. She wonders what they would do with their lives since Laura refuses to try to help and spends all her time playing with her glass menagerie and her old phonograph records. Amanda decides they must have a gentleman caller for Laura, who tells her that she has liked only one boy whole life, a high school boy called Jim. उसके कुछ दिन बाद जब अमेंडा घर आती है लॉरा के स्कूल होते हुए, उसको ये पता चलता है कि लॉरा कब के स्कूल से ड्रॉप कर चुकी है. अमेंडा इज शॉक्ड. वो सोचती है कि अब उनके लाइफ में क्या होगा, जबकि लॉरा कोई भी हेल्प नहीं करना चाहती है और हर वक्त अपने ग्लास मेनाजरी एंड ओल्ड फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स के साथ रहती है. अमेंडा अब ये डिसाइड करती है कि किसी भी हाल में अब लॉरा को एक जेंटलमैन कॉलर ढूंढना पड़ेगा, जिसके रिप्लाई में लॉरा कहती है कि उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक आदमी से प्यार किया था, अ हाई स्कूल बॉय जिसका नाम था जिम.
When Tom goes out to the movies at night, Amanda accuses him of doing something else rather than going to the movies every night. They have an argument. The next morning, after Tom has apologized, Amanda asks to find some nice gentleman caller for Laura and to bring him home for dinner. और जब टॉम मूवीज देखने के लिए रात में निकलता था अपने घर से, अमेंडा उसको हर वक्त एक्यूज करती थी कि वो कुछ काम की चीज़ करे, ऐसे फालतू के मूवीज़ देखने से अलावा। इस बात में वो दोनों का झगड़ा हो जाता है। और अगली सुबह जब टॉम अपने माँ से माफ़ मांगता है तो अमेंडा उसको कहती है कि वो एक नाइस जेंटलमैन कॉलर को घर ले आए फॉर डिनर लॉरा के लिए। A few days later, Tom informs his mother that he has invited a young man, Jim O'Connor, home for dinner. Amanda immediately began to make rather elaborate plans for the gentleman caller. और कुछ दिन बाद टॉम अपने माँ से कहता है कि उसने एक जवान लड़का जिम ओकॉनर को डिनर के लिए इनवाइट किया है। अमेंडा बहुत खुश होती है और इमीडिएटली प्लान बनाने लगती है फॉर दिस जेंटलमैन कॉलर। The next night, Amanda oversees Laura's dress and adds some gay deceivers to it to make Laura more attractive. When she mentions the name of the gentleman caller, Laura realizes that it is possibly the same Jim on whom she had a crush in high school. She tells her mother that she might not be able to come for dinner if it is the same Jim. और अगली रात जब अमेंडा लॉरा के ड्रेस को देखती है तब वो उसमें सम के डिसीवर्स ऐड कर देती है जिसकी वजह से लॉरा मोर अट्रैक्टिव दिखे। और जब अमेंडा जेंटलमैन कॉलर के नेम मेंशन करती है तो लॉरा जल्दी से रियलाइजेस करती है कि वो सेम जिम तो नहीं जिसको वो पसंद करती थी हाई स्कूल में। और वो अपनी माँ से कहती है कि अगर ये सेम जिम है तो वो डिनर के लिए नहीं आ सकती है। Amanda will have nothing to do with some foolishness, and even though Laura is sick when the gentleman caller arrives, Amanda forces her to open the door. It turns out to be the same Jim and Laura knew from high school. At dinner, she is physically sick and begs to be excused. अमेंडा अब ये अपॉर्चुनिटी किसी भी हालत में लूज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए लॉरा की तबीयत बिगड़ने के बावजूद भी जब वो जेंटलमैन कॉलर आता है अमेंडा उसे फोर्स करती है कि लॉरा डोर को ओपन करे। और डोर के ओपन करने के साथ लॉरा रियलाइज़ करती है कि ये लड़का सेम जिम है जो लॉरा एक समय में हाई स्कूल में उसे पसंद करता था। डिनर के वक्त में भी वो फिज़िकली सिक होती है और एक्सक्यूज़ हो जाती है। Amanda later sends Jim, the gentleman caller, into the living room to keep Laura company while she and Tom do the dishes. As Jim and Laura get talking, Laura loses some of her shyness. She is rather charming. Jim is attracted by her quiet charms, but later, having kissed her, he informs her that he is already engaged. When Amanda appears, Jim explains to her also that he is engaged and must go now. और डिनर
ख़त्म करने के बाद अमेंडा जिम को लिविंग रूम में भेजती है जहाँ पर लॉरा थी। वो कहती है कि लॉरा को जिम थोड़ा सा कंपनी दे, तब तक वो और टॉम दे वुड डू द डिशेस इन द किचन। और वो देखती है कि लॉरा जो फर्स्ट में शर्मा रही थी, नाउ वो धीरे धीरे अपना शाइनेस लूज़ कर रही थी। शी इज़ रादर चार्मिंग और जिम उससे अट्रैक्ट होती है और उसको किस करने के बाद जिम लॉरा को कहती है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। अब जब अमेंडा अपीयर होती है लिविंग रूम में, जिम सब बात उसको बताता है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है एंड अब उसको जाना होगा। अमेंडा इज सो स्टन्ड that she accuses Tom of deliberately playing a trick on them. The play ends with Tom some years in the future, thinking back on his sister Laura, whom he can never forget. अमेंडा ये जान के कि जिम शादीशुदा है, वो एकदम स्टन्ड हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है और फिर से टॉम को अक्यूज़ करने लग जाती है कि वो एक ट्रिक खेल रहे थे उन पे। और ये कहानी ख़त्म होती है टॉम के साथ जो फ्यूचर में है अब और ये सोच रहा है उसके सिस्टर लॉरा के बारे में जिसे वो कभी भी नहीं भूल सकता। सो या, दिस इज़ द मेमोरी प्ले इन विच टॉम ये सब बातें नरेट करता है अपने पास्ट इंसिडेंट से। There are just 4 characters in the play. They are Amanda Wingfield, the mother whose husband deserted her years ago, leaving her to raise a son and a daughter. She lives partially in the world of her youth and her gentleman callers in order to escape the brutalities and harsh realities of the present. और ये कैरेक्टर अमेंडा विंगफील्ड के हैं, एक माँ जिसके हस्बैंड उसको कई साल आगे ही छोड़ चुका है, एक बेटा और बेटी के साथ। वो अपनी ज़िंदगी को पार्शियली जीती है अपने जवानी एंड जेंटलमैन कॉलर्स को सोचते हुए, सो दैट ये सब उसे एस्केप करने में मदद करती है द हार्श रियलिटी ऑफ प्रेजेंट। और नेक्स्ट इज टॉम विंगफील्ड, Amanda's son, who is employed in a shoe warehouse in order to support the family. A poet by nature and temperament, Tom feels that his environment is destroying his creative abilities. Tom Wingfield Amanda का बेटा है जो एक जूते के फैक्ट्री में काम करता था so that उसको फैमिली को कुछ सपोर्ट मिल जाए। वो एक पोइट थे बाय नेचर और टॉम सोचता है कि जो इन्वायरमेंट में वो रहता है वो सब उसके क्रिएटिव एबिलिटीज़ को भंग कर रहा है। नेक्स्ट इज़ लॉरा विंगफील्ड, अमेंडा's daughter, who is slightly crippled. She has retreated from this world and lives in a world of old phonograph records and miniature glass animals. अब लॉरा विंगफील्ड अमेंडा की डॉटर है जो थोड़ी सी अपाहिज है। उसने ये रियल वर्ल्ड में जीना छोड़ दिया है। अब वो जीती है एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर उसके ओल्ड फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स है और मिनिएचर शीशे की एनिमल्स।
Next, and the last is Jim O'Connor. He is the emissary from the world of reality, an average young man on whom Laura had a crush in high school. Jim brings a touch of the common world. अब जिम ओकॉनर एक मैसेंजर की तरह है रियलिटी की दुनिया से, क्योंकि यहाँ पर सब अपने अपने वर्ल्ड में जी रहा है इंस्टेड ऑफ लिविंग इन रियलिटी। जिम ओकॉनर एक यंग आदमी है जिसे लॉरा पसंद करती थी हाई स्कूल में। Structure of the play. The structure of the glass menagerie involves the presentation of scenes through Tom's memory. Tom Wingfield is both the narrator and the character in the play. The separate scenes should be viewed as a part of Tom's memory at a crucial point in his life. The scenes do not function to give us a traditional plot or storyline. Instead, they are selected to give audience a slice of life that the author once lived through. In his own world, he wants to present truth through illusion. That is, he wants to try to say something about his life by recalling certain scenes from the past. The plot is thus structured upon the principle of presenting a series of episodes which should be accumulate to make a total comment about a specific life. This type of structure forces Tom to be both a narrator and a character in the play. He must let the audience know that these are the scenes from his memory and that he is both the person remembering them and the person centrally involved in these scenes. Some critics have objected to this structure because, as they point out, Tom could not possibly know what happened in the scene between Laura and the gentleman caller. But, as Tom suggests, he takes the license of a poet and projects himself into scenes in order to present poetic truth. Technical devices. The stage direction called for the use of several technical devices in order to convey the idea that this is a memory play. For example, some of the scenes should be represented with some type of net or gauge between the audience and the actors. Or in many places, Williams suggests the use of titles and images to be projected on a scene in order to force or reinforce the idea of memory and to recall certain events that occurred during the time of the play. Others are supposed to suggest some symbolic aspects of the play. But when the play is produced, they are virtually never used. Most directors feel that the play is sufficient without the extra use of images. In fact, most directors feel that the use of these central images would distract from central action of the play. But the point is that William included them so as to help with the structure of the glass menagerie as a memory play.